Highly excited states for hydrogen-like atoms, also called Rybach states with nucleus charge ZE, are defined by their principal quantum number n, where n is very smaller than 1. Which of the following statements is true? So the first statement is relative change in the radii of two consecutive orbitals does not depend on z. So the radii is given by Rn is equal to 0.529 n square by z. So if we are talking about the relative change in the radii of two consecutive orbitals, so let's say first orbital is n and the second will be Rn plus 1, that is 0.529 n plus 1 square divided by z. So as we can clearly see that only the value of n is changing between two consecutive orbitals. So therefore the change in the value of radius will only be attributed to the change in the value of n and not on the value of z. So the first statement is a correct statement. The second statement says relative change in radii of two consecutive orbitals varies as 1 by n. So we already have the radii of nth and n plus 1th orbital. So the change in the radii of two consecutive, that is delta r, is equal to r n plus 1 minus rn, which is equal to 0.529 by z times n plus 1 squared minus n squared, which is equal to 0.529 by z 2n plus 1. It talks about the relative change. So relative change will be delta Rn upon Rn, which is equal to, since 0.529 by z are common in the expression for Rn and delta R, so they will get cancelled out. So we are left with 2n plus 1 by n square is equal to 2 by n plus 1 by n square. And since it says that n is very smaller than 1, so this term can be neglected and we are left with 2 by n. Therefore, the relative change in the radii of two consecutive orbitals varies as 1 by n. So this statement is correct as well. The third statement talks about the relative change in the energy of two consecutive orbitals. Energy in nth orbital is given by En is equal to minus 13.6 z squared by n squared. So En plus 1 will be minus 13.6 z squared upon n plus 1 squared. Now they are talking about the relative change in the energy of two consecutive orbitals. So let's say delta E will be equal to En plus 1 minus En, which is equal to minus 13.6 times z square upon 1 by n plus 1 squared minus 1 by n squared, which is equal to 13.6 z square 2n plus 1 upon n plus 1 squared n squared. And the relative change therefore will be delta E upon En. So the 13.6 and z square are constant terms, they will get cancelled out and we are left with 2n plus 1 upon n plus 1 squared z squared into 1 upon En, and En is 1 by n square, so 1 by n square. Sorry, this should be n square. So n square and n square get cancelled and we are left with 2n plus 1 upon n plus 1 squared, which can be written as 2n plus 1 upon 1 plus 1 by n
squared, and since n is very very smaller than 1, so 1 by n tends to 0, which means 2n plus 1 upon n square, which becomes squared, which becomes 2 by n square, 2 by n plus 1 by n squared, which becomes 2 by n. So the relative change in energy of two consecutive energy states is dependent on 1 by n, whereas the option says that it should vary as 1 by n square, so option C is incorrect. Now, the final statement says that relative change in angular momenta of two consecutive orbitals varies as 1 by n. So, the angular momentum for nth orbital is given by nh, which means for n plus 1 it will be n plus 1 h. Change in angular momentum becomes n plus 1 minus n times h, which is equal to h, and the relative change becomes change in angular momentum divided by angular momentum for nth orbital, which is h upon nh is equal to 1 by n. So the relative change in angular momentum varies by the factor of 1 by n. So the final statement, D statement, is also correct. So the answers for this question are A, B and D. हम लोग का क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है कि एक रेडियस ऑर्बिट का जो रेडियस है हाइड्रोजन लाइक एटम का वो 4.5 ए नॉट है, जहाँ ए नॉट हमारा बोर रेडियस है। मतलब बोर रेडियस का मतलब जब जेड का वैल्यू 1 एन का वैल्यू 1 हो तो ठीक है। कह रहा कि फिर एंगुलर मोमेंटम जो है वो 3h/2 पाई है, जहाँ एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट और आर राइडरबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि द पॉसिबल वेवलेंथ में डी एक्साइट होगा तो क्या होगा। तो पहले इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो हम रेडियस जानते हैं कि हमारा आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है, जहाँ एन हमारा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं और जेड हमारा उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नॉट दिया है बोर रेडियस, ठीक है, और आर का वैल्यू दिया है 4.5 ए नॉट दिया है, और एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, ये हमारा एन स्क्वायर है। एक इक्वेशन यहाँ लिखते हैं तो मतलब 4.5 इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड, यह इक्वेशन 1 मान लिए। अब दूसरे में कह रहा है कि हमारा एंगुलर मोमेंटम जो वो 3h/2 पाई का है। तो हम जानते हैं कि एम वी जो होता है एम वी आर या एंगुलर मोमेंटम, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, ये जो होता है हमारा एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इंटू एच अपॉन 2 पाई, और ये हमारा दिया है 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई। इसका मतलब है कि n का वैल्यू 3 हो गया, यहाँ से n का वैल्यू 3 आ गया यहाँ से, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/4.5, तो ये 2 हो जाएगा। सो हमारा z का वैल्यू 2, ठीक है, और n का वैल्यू 3 है। तो कह रहा है कि अब डी एक्साइट होगा एटम तो पॉसिबल वेवलेंथ क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारा जो होता है ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 2 है, और ये n बराबर 1 है। ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। यहाँ पे बोल रहा है क्योंकि n बराबर 3 है तो यहाँ पे है, और z हमारा ये मतलब हीलियम प्लस है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक पॉसिबल केस है, एक यहाँ आए, फिर एक यही वाला सेम जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, फिर यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए, मतलब n बराबर 3 से 2 पे आए, फिर 2 से 1 पे आए, या डायरेक्ट n बराबर 3 से 1 पे आ जाए तो तीनों केस पॉसिबल, मतलब 3 वेवलेंथ निकलेंगे। अब हमें उन्हीं वेवलेंथ को निकाल के हमें चेक करना है। तो हम जानते हैं 1 बाय लैम्डा जो होता है वो आर राइडरबर्ग इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 बाय एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाय एन आई स्क्वायर। एन एफ मतलब इनिशियल कहाँ है और फाइनल कहाँ है। तो हम पहले इस केस को सॉल्व करते हैं, n बराबर 2 से 3 तक। ठीक है, तो 1 बाय लैम्डा 3 से 2 में जब जा रहा है तो आर जेड का वैल्यू 4 है। ठीक है, फाइनल हमारा 2 है, तो फाइनल हमारा 2 है 1/4
4 माइनस 1/9 है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये जो होगा 9 चौको 36, तो ये 9 माइनस 4 5/36 5/36 इंटू आर इंटू 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लैम्डा 3 से 2 जो होगा, सॉरी ये 2 है, 3 से 2 जो होगा वो हमारा उलट जाएगा, तो 9/5 आर। ठीक है, तो 9/5 आर हमारा एक ऑप्शन पॉसिबल है, 3 से 2 जाएंगे तो यहाँ 9/5 आर है, तो ये हमारा एक करेक्ट हो गया। अब हम चेक करते हैं 3 से 1 और फिर 2 से 1। ठीक है, तो 1/लैम्डा 3 से 1 जब जा रहा है तो 4r तो होगा। ठीक है, 1/1 माइनस 1/9, तो ये हमारा 8/9 होगा। तो 4r इंटू 8/9, तो यहाँ से लैम्डा 3 से 1 जो होगा हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, 9/32r हो जाएगा, 9/32r। तो 9/32r ऑप्शन है, चेक करते हैं। हाँ, तो 9/32r ऑप्शन है, तो एक ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा चेक करना है n बराबर 2 से 3 की। ठीक है, तो 1/लैम्डा n बराबर 2 से 1 की ओर जब जाएगा, क्योंकि हमने 3 से 1 और 3 से 2 हमने सोल्व कर रखा। ठीक है, तो जब जाएगा तो 4r हो जाएगा, और ये 1 क्योंकि 2 से 1 पे जा रहा, तो 1 माइनस 1/4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3/4। तो 4r इंटू 3/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो लैम्डा 2 से 1 आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1/3r होगा। तो 1/3r ऑप्शन है क्या, तो 1/3r ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन 1 या ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 या जिसको ए और सी भी कह सकते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमने सॉल्व करके आपको नीचे दिखा दिया। थैंक यू। Problem is the electron in a hydrogen atom makes a transition N1 to N2 where N1 and N2 are the principal quantum numbers of two states. Assume the Bohr model to be valid. The time period of the electron in the initial state is 8 times than that in the final state. The possible values of n1 and n2 are. So formula for time period T is equals to 2 pi r divided by v, velocity, and from Bohr's model mvr is equals to n h cut, and here value of h cut is h upon 2 pi, so n into h upon 2 pi, and r is equals to radius, this equals to n h upon 2 pi, and v is equals to velocity, this equals to n h upon 2 pi m into r. Now put value of velocity in time period, so t is equals to 2 pi r by value of velocity is nh upon 2 pi m r. So t is equals to 4 pi square m r square upon n into h. R is directly proportional to n square. So R is equals to constant k n square. So put value of radius r in time period. So t is equals to 4 pi square m upon n h, and value of r is k n square to the whole square. So t is directly proportional to n cube, and t1 by t2, this is equals to, for t1 value of n is 1 cube, and for t2 this is t cube. So t1 is equals to 8 into
T2 and T1 by T2. This is equals to 8. So 8 is equals to N1 by N to the cube. So N1 by N2. This is equals to 2. So N1 is equals to 2 N2. And by this relation, N1 is equal to 2 N2, the correct option is this and this.